Good evening, everybody. Today, we are here for a very special talk. It is actions speak louder than words. Words can be twisted into any shape. Promises can be made to lull the heart and seduce the soul. Words mean nothing. Actions is all what it takes. It's better to be quiet rather than otherwise. Judge him by the action, they say. Examine the actions. First of all, very good evening to Anwar Ghazali, sir. He's an educator, and we have Prachi Tiwari with us, the psychologist of the team. Today's topic is actions speak louder than words. So, Anwar, sir, I straight away take it to you. I want you to start your comment about it. All right. I think I'd begin by saying that all said and done, parents are also human beings. So what if they are adults and they are in their 30s or 40s or 50s? The fact remains that they are liable to make mistakes themselves. So this whole idea of being a perfect role model to your children and acting right all the time and not erring, not anymore now that you are a parent, etc. I think it's a bit too demanding for the poor parents. So my opening comment would be this. I am a parent, a father of three, but for God's sake, I need my right to make mistakes and to go wrong now and again, and to honestly confess it if I've done something that I myself am not quite happy with to my children. So frankness and communication is of the utmost importance rather than being a perfect parent, because that is something only found in films and fiction, maybe mythology, not in real life. So that is what I have in mind right now. I'll stop here for the other ladies, the two ladies to speak. Ghazali ji, I think you said a very beautiful thing. I think there is a lot of pressure on parents to give their best performance. I'm also a parent, so I can understand that. But, when we talk about actions speak louder than words, a lot of times we are preaching something to our children and we are doing completely contrary things, what we have already said. And obviously, it creates a certain impact on the children कि भाई हमको बोल तो ये रहे थे मगर खुद से वो ये कर रहे थे, ऐसा क्यों है? इसमें मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल भी कोट करना चाहूंगी. Couple of months ago, I remember a lady had come to me with the child and she wanted me to take some classes. And I said, all right. And I do rewiring from negative to positive for children as well. And the boy was a tiny little boy, say about in 4th grade. And she complained to me he does not have manners. And I was hearing a story as normally a teacher would. I wanted to get all the information from her beforehand. So she went on. And one of the concerns was that he does not knock the door when he comes into the room. I heard her, completely. And after that, I asked her one question. I said, when you go to his room, do you knock the door? She was aghast. She said, no. I said, then why would he knock yours? When we behave in a certain fashion, certain way with our children, that's exactly what they will do. And Prachi, don't you think अगर हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसका impact बच्चों पर कुछ और होता है? See, Shefali ma'am, the thing is, as Ghazali sir said, that parents are human beings. But then we should realize this thing that now we have a responsibility of tiny human beings around, whether we are parents or we are teachers or mentors, whatever we are. Right. The thing is that it happens. Yes, I always tell this that we do mistakes and we should be communicative with our children कि अगर गलती हो गई है तो मुझसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है,
और अब हम लोग मिलके इसको सॉल्व करेंगे. बट द थिंग इज शिफाली मैम, अगर एक कंटिन्यूस पैटर्न है, आपके एक्शंस और वर्ड्स में डिफरेंसेस, कंसिस्टेंट डिफरेंस है, और ये डे टू डे लाइफ में आई कैन टेल यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट. और अगर सम पेरेंट्स और व्यूअर्स whosoever आर लिसनिंग टू दिस, दे विल आल्सो एग्री. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा है जब बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो एवरी पेरेंट whosoever come to me for counseling, उनका सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि मैम ये ना मतलब मोबाइल ही नहीं छोड़ता, ये टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं. मैं अगेन आई डू द सेम, आई आस्क देम कि जब आप उसको पढ़ने बिठा रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी दैट टाइम? तो वो बच्चा तो अपने आप डिस्ट्रैक्ट है ना. द थिंग इज कि अगर एक कंसिस्टेंसी है, आप डिफरेंस है आपके वर्ड्स और एक्शंस में, तो वो क्या होगा कि बच्चे का ट्रस्ट और जो बिलीफ सिस्टम है आपके ऊपर या रिस्पेक्ट है, वो कम करेगा. एंड अगर साइकोलॉजिकली मैं इसे पुट अप करूं, तो ये इससे क्या होता है, अगर छोटे बच्चे हैं स्पेशली आपके घर में, तो एक तरह का सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट्स भी ये बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है कि बोलते तो करने के लिए ऐसा है और करते ऐसा है. सो व्हाट शुड आई डू? मैं इनके एक्शंस को मतलब ऑब्जर्व करके वो सीखूं, या ये जो बोल रहे हैं वो करूं? सो एक कॉन्फ्लिक्ट हम बच्चे के अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट का सीड हम डाल रहे हैं. Absolutely, I completely agree with you, Prachi, and I think the child becomes confused. And मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स तो कुछ कह के और कुछ और करते हैं, तो मुझे लगता है अपने आप को इतना वो क्या कहते हैं, they don't think that we have done a crime. But if the child does something similar, when he's saying something and behaving contrary, parents react in a completely, like a crazy way. Don't you agree with me, Ghazali sir? Absolutely, man. I do. And at that time, what do you think should be the parents' role? How are they going to, how should they act? होता है, बच्चा भी कई बार कुछ कह देता है मगर उसका बिहेवियर कॉन्ट्ररी होता है. So what do you think, how should the parent behave? All right. As Prachi very correctly said, now that we are parents, we have an added responsibility to behave, because we are being watched and observed 24/7. I would say, even though I insist on my freedom to make my own mistakes, but of course the other side of the coin is that I am a parent, I am a father, and I can't take leave of the fact that there are 3 children who are around me most of the time. And for example, if I don't insist on being punctual for things, for example, with what face shall I ask them to observe punctuality in their life? If I tell them to do exercise for physical fitness and I keep sleeping till late in the morning, it won't make any sense to them. Or if I tell them to cut down on their TV time and am myself a couch potato, then it's not going to cut ice with them. So absolutely, be it parents or be it role models or be it community leaders or our netas or anyone, if there's a chasm or gap between your kathni and your karni, then people who are around are not going to be impressed, and they are not going to, listen to what you say. They are going to see what you do. So yes, the fact remains that we adults and we parents have to be careful, and we have to set examples to our children rather than giving homilies to them. As the saying goes, example is better than precept. So the mistakes that most of us parents make is this: we would lecture our children, but we would not think in terms of setting an example quietly and without saying anything to them. And that is one big pitfall all of us parents are liable to fall into. I absolutely agree with the two of you. I have realized I must share some incidents with you. Always sharing stories helps. Mohin was very little when there was a time that I used to watch TV when he was quite tiny. But I realized, I said, as Mohin will grow up,
this is one little habit I'd really like to change. And then because I became conscious of it, immediately I removed the television from my room. I did not want the TV to be there. And in fact, very honestly, till date, I mean, my son is 16 now, but I hardly switch on the TV. I mean, so today I can actually tell him when he's sitting in front of the TV, I'm like, Mohin, I think, you can just skip the TV or maybe just watch it for some time and do something else, which is more, something that you can achieve in a better fashion rather than watching this box. And he completely takes me seriously because he always sees that his mama is not busy watching TV. He could have said otherwise. Like if I started, I mean, I was quite insistent, ki please, when you get up in the morning, you make your own bed. I always have this story. You most successful people make their beds in the morning. So, and I make my bed. And this I got from my childhood because I used to see my mom making her bed. And obviously she would say, मैं कर सकती हूँ, तुम कर सकते हो. तो आज मैं भी वही कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, तो तुम भी कर सकते हो. Pandemic शुरू हुआ, staff कम हो गया. So obviously when Mohin saw that my mom picked up the jharu, which, I normally don't. And when he saw me sweeping the floor, he promptly came and he said, Mama, you do the jharu. Okay, fine. I will help you with the pocha. And it happened on its own because he saw that I wasn't just sitting there and ordering, though I had some stuff at home, but we were little, stooged on stuff. Utna stuff nahi tha jaise normally hota hai. So he understood, Mama is doing it, so I should also do it. So I set an example. So I think it's very important for us as parents, to set these examples, because then I think the children will take us a little more seriously than otherwise. Absolutely. And वही कहते नहीं तो जो शब्द हैं वो खोखले हो जाते हैं. They're shallow. They're meaningless. And if you kind of are ready to give that kind of respect to other people, and I think kids also are watching you constantly, and if they see कि we are not just telling them कि भाई बड़ों को इज्जत से देके बात करो और खुद नहीं कर रहे हो. Absolutely. That's a very big thing I've seen with many people. Because this is, अरे बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, but at the same time क्योंकि वो अपने आप को वैसे ही बड़े समझते हैं, but they deal with them in a different fashion. थोड़ा गुस्सा आ जाता है, anger आ जाता है, थोड़ा you don't even realize that you're probably on this note, मुझे एक केस याद आया. I had a student मेरे school में where I was working. So this girl ना, she came to me and she said कि मुझे ना मम्मा पे बहुत गुस्सा आता है. मैंने कहा क्यों बेटा, why? So उनकी ना her grandmother who fall ill, वो जो old age से related, and she was on bed. तो I can understand कि मदर को भी बहुत वो काम है और सब कुछ बेड पे करना पड़ रहा है, तो चिढ़ती रहती होंगी. एंड देन ये जो बच्ची है, ये अपनी माँ को देख रही है कि ये मेरी दादी से ठीक से बात नहीं कर रही है. माय grandmother is ill and she is not caring, or she is not being empathetic to her. एंड मुझे कहती है कि बोले देन वन डे आई थिंक उसने भी अपनी मम्मा से कुछ बदतमीजी की होगी. एंड वो ये कि मदर मेरे पास में आई कि प्लीज टेल हर कि शी डजंट बिहेव. देन आई टेल हर कि आपकी बेटी, शी केम टू मी 2 days बिफोर एंड शी शेयर्ड विथ मी कि मेरी मम्मा मेरी दादी से शी इज नॉट बीइंग गुड टू माय ग्रैंडमदर. सो एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड सो मैंने मम्मा से बदतमीजी की. Though the girl was feeling sorry, but वही बात होती है ना कि जो वैल्यू सिस्टम है हमारी फैमिली में या हमारी सोसाइटी में, the value system or beliefs which we want to inculcate in our children, वो हम उससे ना दूर नहीं जा सकते हैं. We should stick to them while we are behaving with our elders or while we are behaving in certain situation. Right, sir. Gazali sir, you wanted to say something. Yes, एक और एस्पेक्ट है जो प्राची ने जो बात कही उसमें, कि यहाँ पर मदर्स की मेजॉरिटी है और फादर एक ही है इस शो पर. तो मैं जरा फादर या हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू पुट फॉरवर्ड करना चाहता था. मेरे एक्सपीरियंस में a lot depends on how the father treats the mother. A lot depends on that. Yes. और इस मामले में हम फादर्स की या हस्बैंड्स की अच्छी खासी अग्नि परीक्षा हो जाती है. अग्नि परीक्षा, नो लेस. क्योंकि
हमारी स्पाउसेस भी कभी कभी कुछ ऐसा कर सकती हैं जो हमें प्रोवोक करे या हमें इन्फ्यूरिएट भी कर दे, लेकिन अगर बच्चे अराउंड हैं तो हम गुस्सा होने का अधिकार हमारा छिन जाता है, क्योंकि फौरन मेरे 3 बच्चे हैं और वो तीनों अपनी माँ की साइड में होते हैं, हमेशा मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो मैंने एक्सपीरियंस ये सीखा है कि बच्चों की माँ को ठीक से ट्रीट करना सीखो अगर डोमेस्टिक पीस चाहिए और बच्चों की तरफ से रिस्पेक्ट चाहिए तो। और मैंने एक कोट भी कहीं पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे आज भी याद है कि द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चिल्ड्रन इज लविंग देयर मदर, रिस्पेक्टिंग देयर मदर। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है जो कोई फादर दे सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो डिस्कस किया जाना चाहिए, और एज अ फादर और हस्बैंड मैंने सोचा कि मैं इसे पेश करूं, सामने लाऊं। I think that's a beautiful This aspect. is a very important It is a very important point you put to Ghazali sir. It is very important because then again you are setting an example in front of your children. Whether you are having a daughter, she should know जब वो बड़ी होगी और when she will enter into her marital कि मैं क्या expect करूं अपने husband से, किस तरह का treatment. Like we have seen, especially हमारी society में ना, अगर mother बहुत submissive है, देन वी एक्सपेक्ट डॉटर भी कि वो भी सबमिसिव भी होगी, वो भी मतलब क्या कहते हैं ना कि दबती रहेगी। एंड सेम इफ यू हैव सन, तो उसको भी पता है कि मैं आगे चल के व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई शुड गिवन टू माय स्पाउस। मतलब जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो जो मैरिटल हार्मनी है वो उनमें बनी रहे, उसका सीड आपने अभी डाल दिया अपने अपने एग्जाम्पल देके। The way you are treating your spouse, they are learning from you, right, Shifali ma'am? Absolutely. Absolutely. We're all learning from each other. And what is important is your actions, as we just said. The topic is very strong. It says actions speak louder than words. If it's like if you speak to somebody or treat them nicely, automatically children see that. You don't have to explain them कि कैसे कैसे करना है आपने, क्योंकि वो आपके actions देखते हैं. Like beautifully Mr. Ghazali said कि as a father I'm telling you, I'm sure men have their own issues at home, just like women. I mean, unfortunately, आदमियों की तरफ जरा कम गौर फरमाते हैं. But yes, of course, I must say that it's a very intense subject and we must really look into it, because ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं होता, ऐसा नहीं है that they have a lot of things put inside them. Yes, sir, आप बोलिए. मैं तो कहूंगा कि man is the new woman. Man is the new woman. I completely agree with you. क्योंकि अब औरतों के बारे में इतनी बातें होती हैं, बेचारा आदमी जो है वो साइड लाइन हो गया और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं कभी सर, कभी ऐसा महसूस हम आपको पूछने वाले हैं. And much later is we're actually thinking about also coming up with a different series on this particular topic, sir, with men. Okay. And that's thanks to CatFit that we are going to be sharing this on this particular platform. We have already planned certain amount of series on the similar subjects, sir. I must tell you, आपने बात निकाली तो मैंने बात बता दी. Thank you. बाकी ये है कि मुझे लगता है कि जो हमारे actions होते हैं, they have to be consistent. That is very important. Consistency is the most important in terms of any relationship, whether it is between parents and children or vice versa. जब आप consistent नहीं होते in what you speak and what you do, imbalance happens. That's right. That is what and I'm sure you would also think on the similar line कि जब हम consistent नहीं होते तो that's where the imbalance happens. और तभी हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जब पेरेंट्स को लगता है कि जब हम कुछ बच्चों को समझा रहे हैं तो वो समझते नहीं है, और बच्चों को ऐसा लगता है जब हम कुछ कह रहे हैं अपने पेरेंट्स को वो नहीं सुन रहे, बिकॉज एक्शंस कुछ और कह रहे हैं एंड words are different. That's when we say, oh, I really respect my mom, and then there are girls or boys, they behave contrary to what they are saying.
It's a confusion. And similarly, when the parents publicly or otherwise they say, "Oh, we give a lot of freedom to our child, हमने तो बिल्कुल उसको, हम उसकी किसी चीज में interfere नहीं करते," and the kids are just looking at them and saying, "Yeah, really?" Because, Right. because they have been feeling suffocated and they have been feeling, "Oh my God, I have such parents who say something and they completely do something else." And obviously that conflict is in their mind all the time. And I'm sure Prachi would know there are severe cases when children feel that we cannot trust our parents. Right. This actually happens especially जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना. छोटे बच्चों को तो हम डांट डपट देते हैं कि मतलब even when they question you, like for example एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है ना, और हम बच्चों के सामने ही झूठ बोलते हैं, या बच्चों को ही कहते हैं बोल दो कि मम्मा घर में नहीं है या पापा घर में नहीं है. दिस इज अ वेरी टाइनी एग्जाम्पल. तो द थिंग इज कि हमें बच्चों के साथ बैठ के एक मतलब वही बात है कि कम्युनिकेशन, अगेन आई एम कमिंग टू द कम्युनिकेशन, कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उसका क्या रीजन है, राइट? मतलब वेयर मतलब मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही हूँ, मेरा कोई रीजन है. अगर बच्चे को ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को सिखाओ कि झूठ बोलो, बट द थिंग इज कि डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं. सो द थिंग इज कि पहली बात तो कम्युनिकेट करो, और दूसरी बात तो क्या है कि हमेशा ये हमें अपने ध्यान में रखना है कि व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, राइट? मेरे एक ये थी स्टूडेंट आई वाज हैविंग, तो शी हैड सम एंगर इश्यूज एंड शी वाज नॉट इवन इन टीनेजर ही थी, शी वाज अ टीनेजर, आई गेस 10th 11th स्टैंडर्ड में होगी. So जब केस मेरे पास आया and when I go into her history and all, then I realized कि घर में फादर का भी इशू है, मतलब एंगर से रिलेटेड जो इमोशंस हैं. He was going to some psychiatrist also for therapy. So वही बात है कि मतलब कई बारी हम कहते हैं ना कि बच्चे हमें they are showing us mirror by their behavior. That's true. तो ये बात कि मतलब वो बच्ची अब अपने फादर को देख के उसका भी एंगर, मतलब इवन उसको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट द थिंग इज कि वो इमिटेट कर रही है अपने फादर का बिहेवियर, अननेसेसरी एंगर शो करके या बच्चों के सामने उसी तरह का बिहेवियर करके. Prachi, we don't even realize when we actually become like our own parents sometimes. हमें पता भी नहीं चलता है. बहुत सारी चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं. All those things that we probably didn't like in our parents become a part of our own personality. Absolutely. Very rarely it happens. रीजनिंग करते हैं शेफाली मैम कि क्या हुआ, वो भी तो कर रहे थे, उन्होंने भी तो किया है, तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो इसमें क्या गलत है? हम अपने गलत that रीजनिंग से सही करते हैं. Yeah, but what I was trying to tell you is very rarely do we pause and we recorrect our things. Okay, fine. This is something I did not like about my parent. Consciously, I must stop it now. Absolutely. But for this, you have to make a conscious decision. And this doesn't have happen randomly. Ghazali sir, though, with regard to this, I also wanted to ask you, can we actually create a bond with children that if we fail in doing what we say at times, hum keh rahe hain, and we fail, is it we can create a bond with them so that we can accept, and like how can we create that bond with them? Absolutely. मैम, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो बाप को चाहिए कि बेटे को दोस्त बना ले. Perfect. तो ये 20th सेंचुरी में था हमारे पेरेंट्स के जमाने में कि उनके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स के बीच एक दूरी थी और वो ठीक से बात भी नहीं करते थे. मेरे वालिद कहते थे कि वो मेरे दादा से चेहरे पर देख के ठीक से बात नहीं कर पाते थे, बहुत डरते थे उनसे. लेकिन मेरे वालिद और मुझ में कुछ कम्युनिकेशन होती थी, और मेरे बेटे और मुझ में तो बहुत ज्यादा होती है. वी आर फ्रेंड्स. तो वन थिंग दैट आई एम ऑल फॉर is real, genuine, honest friendship between the parent and the child.
especially in the 21st century, now that things have become so competitive, life has become so tough. Both parties need each other even more badly now than they did in the last century. So this, how can you possibly say this to your daughter, or how can you discuss this issue with your son? This mentality has to go now. Everything can be talked about. Of course, there's a way to talk about it, but nothing is taboo. You cannot say no. Children, you go away. Mom and I want to talk. No, they can be party to the discussion once they are a certain age. I mean, if a child is in class 11 or 12, or a daughter is in college, why can't she be party to discussions between husband and wife or mom and dad? There should be an open and frank relationship. And as Prachi very correctly said, this communication must keep happening all the time. Ma'am, no matter how hard we try, we can never ever become error free as parents. We will slip and we will make errors, and there will be dichotomy and difference between what we say and what we do. Of course, being a good parent is about bridging that gap increasingly so that we become better and better as parents. But there will be issues, and the children will very well see it, or see those issues. Now, honesty and an honest discussion, conversation would help both parties, I would say. I think my son knows my failings very well. But then he also knows that dad also has certain very strong points. And he knows that a human being is a combination of strengths and weaknesses, and my dad is no exception. Right. So this mindset, You know, last Gopali sir, yeah, ma'am. Yes, ma'am. Prachi, ma'am. no, please sir, continue. No, this mindset that you got to be perfect. You know what, Shefali, ma'am? All my young life, during my young ages, till I was 40 or something, I've been trying hard to be perfect. But take it from me, you can never ever achieve that goal. Never. So I stop trying to be perfect now. I would rather be human than perfect. I think you said a beautiful thing. I think suddenly I can tell you, Ghazali sir, that suddenly when we reach 40, I think we get liberated in our minds. That's right. Before that, we are so stressed to make it perfect for every relationship, including Yeah, with that's I will tell you a truth. Like being with children for so many years, we were initially discussing about role model, right? So the thing is, if you ask me from child's point of view, कि वो किसको role model देखता है? So it's not like that a child wants a perfectionist as a role model. एक बच्चा उसको रोल मॉडल बनाएगा जो उसको इंस्पायर कर सके. इफ यू आर अ पेरेंट और टीचर हु कैन इंस्पायर योर चाइल्ड, अगर बच्चे को पता है कि माय फादर और मदर हैव गॉन थ्रू फेलियर्स एंड देन अगेन दे राइज, दे कैन ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, वो आपको अपना रोल मॉडल बनाएगा. अगर आपके बच्चों को पता है कि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स हैं, ये जो इनकी वैल्यूज हैं, ये उनको रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो आपको रोल मॉडल बनाएगा. इट्स नॉट लाइक कि इफ यू आर परफेक्ट तो ही वो आपको फॉलो कर रहा है. नहीं, इवन अ चाइल्ड इज नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट रोल मॉडल. ही इज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन मोटिवेट हिम, हु कैन गाइड हिम, राइट? Absolutely. Right. We cannot be Superman, we can't be Supermom, Superwoman. It's not possible. It's very mythological. It's not even true. So I think when you stop being perfect, as Ghazali sir just said some time back, and what you said, Prachi, I think life becomes so easy. और जब आपकी गलतियां होती हैं, even as a parent, I think the biggest asset is just accept it. And once you start to Right. accept it and have a conversation with your child, I think it sorts many things. And when you tell your child, and when you yourself are vulnerable, and you say, hey, listen, I know I have flawed here. I know I have made a mistake. But I think honesty with your child is very important, because when you are honest with your child and you accept your mistake, I think the child learns the same. And when they make a mistake, but the thing is, as a parent, जब बच्चा गलती कर रहा है, फिर आप ये मत दिखाओ कि मैं पेरेंट हूं और वो डंडा उठा लो.
That's not right. That's when you are supposed to say, ठीक है बेटा, it's okay, you are human, I can understand. गलती किसी से भी हो सकती है. So that's the magnanimous attitude you must have. You can't have two sets of parameters, one for your own self and one for the child. Absolutely. That cannot happen. That's where that's a biggest flaw as a parent. We treat the children with a different parameter, and when it comes to us, we take it in a different manner. So I think if we can balance it, and as Ghazali said, कि भाई gap को narrow करो. I think उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती. When you can narrow the gap between a parent and a child, I think that's when the bond of friendship actually begins. And then ये जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं सब माफ हो जाती हैं. क्यों सर? गजाली सर, आप कुछ कह रहे हो? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ क्विकली. प्लीज बोलिए, प्लीज आराम से बोलिए. देयर इज नो मुझे डर लगता है कहीं मैं अपना वेलकम आउट स्टे ना करूं, ज्यादा ना बोलने लगूं. बिल्कुल भी नहीं सर, आप नहीं, बिल्कुल नहीं. who is supposed to be talking the most. तो एक तो ये डर हम इंडियंस को बहुत रहता है कि अगर किसी से प्यार से बात करो या अच्छी तरह पेश आओ तो वो सर पर चढ़ जाएगा. और हम इसमें बच्चों को भी, अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को भी इंक्लूड कर लेते हैं. डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा लिफ्ट देने से उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, और इस वजह से हम उनको उनके शेयर का प्यार भी नहीं देते. कभी कभी रोक लेते हैं. ज्यादा सर मत चढ़ाओ, ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, आपने बच्चों को बहुत सर चढ़ा दिया है. मुझे लगता है अगर प्यार में सच्चाई है और सचमुच दिल से आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, तो वो समझते हैं और वो कभी इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे. क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपके बच्चे आपका फ्लैश एंड ब्लड हैं, आपका डीएनए कैरी कर रहे हैं. वो कोई पराये थोड़े ही हैं. जैसे आप हैं वैसे वो हैं. अगर आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, सच्ची मोहब्बत, तो वो भी मोहब्बत लौटाने वाले बनेंगे. इसलिए सबसे पहले तो इस डर से बाहर आ जाइए कि बच्चों को ज्यादा सर चढ़ाना. बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं हमारे कि उन्हें सर पर ही रखना चाहिए, मेरा ख्याल है. और I say this with some degree of satisfaction that I've hardly ever been harsh to my children or hit them or beaten them, almost never. और मैं प्रोपेगेट करना चाहता हूँ इस बात को और एडवोकेट करना चाहता हूँ कि माँ बाप जरा होश में आइए और बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए. इट्स बेटर टू err ऑन द साइड ऑफ मर्सी. मैं कहूंगा मर्सी करने में थोड़ा err कर जाएं, गलती हो जाए, वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप, और आप जानती हैं कि आजकल कई बार माँ बाप कुछ ऐसी बातें कर जाते, खासतौर से फादर्स, कि बच्चे बहुत ड्रास्टिक और एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं. और ये चीज और भी बड़ा रिमाइंडर है इस बात के लिए कि हमें जरा एहतियात से, और उनको हम बहुत कम दिन उनके साथ होते हैं, कुछ साल होते हैं, फिर वो दे फ्लाई द नेस्ट एंड गो अवे. तो उन सालों को खूबसूरत बनाना चाहिए और मोहब्बत की फजा घर में कायम करनी चाहिए. ना ये कि डिस्टेंस है और देखो पापा घर पे हैं, आवाज शोर मत करो. ये सब क्या है? ये सब 20th सेंचुरी माइंडसेट है और मैं इसके सख्त खिलाफ. एक और पॉइंट है वो इसके बाद कहूंगा, पहले आप लोग बोलिए. We like to listen to you more, sir. Yes, come on. नहीं, वो दूसरा एकदम अलग पॉइंट था मेरा कि देखिए हम बात करते हैं पेरेंट्स की. there's an S added to it. It's always in the plural. हाँ ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी होती हैं, लेकिन आमतौर से एक इंडियन हाउस होल्ड में पेरेंट्स होते हैं एस के साथ. सिर्फ पेरेंट नहीं होता या नहीं होती. कहने का मतलब ये है कि माँ भी होती है और बाप भी होता है. अब रोल मॉडल्स दो हैं बच्चों के सामने. एक तो फादर है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके वैल्यूज, उसकी प्रायोरिटीज, उसका बिहेवियर, और एक मदर है. तो कई बार इन दोनों में फर्क होने की वजह से भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. पेरेंट्स तो दोनों हैं और दोनों इक्वली अपने हैं. अब अगर इश्यूज में दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी की कमी है या सिंपली डिसएग्रीमेंट है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल. टू इंडिविजुअल्स विल डिफर. तो एक परेशानी बच्चों को होती है कि मम्मी की बात माने या वो जैसे उनका जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करे या पापा को. तो छोटी छोटी बातों में, जैसे पापा टेंड्स टू बी अ हार्ड वर्कर, मम्मी सेज नो, दे मस्ट हैव देयर शेयर ऑफ फन. पापा को घर का खाना पसंद है और मम्मी कहती है अरे यार ईटिंग आउट में क्या प्रॉब्लम है,
और आजकल तो ईटिंग आउट क्या, बाहर से खाना मंगा के खाओ। अब बच्चे क्या करें, कई बार वो आसान ऑप्शन लेते हैं, मुश्किल वाला छोड़ देते हैं। तो बच्चों में कंफ्यूजन सिर्फ कथनी और करनी में फर्क की वजह से नहीं होता, बच्चों में कंफ्यूजन माँ और बाप की पर्सनैलिटीज में क्लैश की वजह से भी हो सकता है। तो इसका क्या हल है, इसका क्या सोल्यूशन, कैसे रिजॉल्व करें इसको, ये भी एक सवाल। गजाली सर, इसमें एक यही सोल्यूशन, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं ना बॉन्ड की, सो एज अ फैमिली वी शुड सिट टुगेदर। कई बार हमारे इंडियन फैमिलीज में तो आप तो पेरेंट्स की बात करो, देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल, है ना, तो और 2 की जगह 4 थॉट प्रोसेस हो गए हैं, 4 बिलीफ सिस्टम हो गए। तो सबसे पहले तो फैमिली में मतलब ये होना चाहिए कि वी आर अ फैमिली, और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बट वो कहते हैं ना कि मतलब दिल तक नहीं जाने चाहिए। इट शुड बी डिसएग्रीमेंट्स जो कि हम मिल के बैठ के बात करके रिजॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल एज यू सेड कि फादर को घर का पसंद है, मदर चाहते हैं कि बाहर जाएं, सो वी कैन सिट टुगेदर एंड मेक एन अरेंजमेंट कि हम वीकेंड पे या हफ्ते में 2 बार हम बाहर जाएंगे या बाहर का लेके आएंगे, एंड देन बाकी टाइम हम घर पे खाएंगे। द थिंग इज कि इससे क्या होता है ना, बच्चे भी सीखते हैं हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू पुट योर थॉट। ऐसा नहीं है कि एक की चल रही है और दूसरे के सारे व्यूज और फीलिंग्स। यहाँ तो हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, हम तो फीलिंग्स तक जा ही नहीं पाते हैं, इमोशंस तक तो जा ही नहीं पाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस इन अ फैमिली कि एक फैमिली मेंबर अपने इमोशंस को सप्रेस ही किए जा रहा है ताकि फैमिली का हार्मोनी ना बिगड़े, है ना। और बच्चे दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, आई एम टेलिंग यू, हम कितना ही नकली स्माइल लेके घूमते रहे, बच्चों को सब पता होता है हमारे घर में क्या चल रहा है। यू जस्ट कांट फूल देम। सो द थिंग इज कि जो हम सबको मिलके उस हार्मनी पे वर्क करना है जिसमें सबके थॉट्स को जगह मिले, जिसमें सबके इमोशंस और फीलिंग्स की कद्र हो, है ना शिफाली मैम? Yes, Prachi, I completely agree with you. You know, my take is also similar in this situation. You know, personally, I feel that when a situation like this happens, I think it's primarily the role of husband and wife. First, they need to sort out their little regime. It's very important. If I want to go out and maybe my partner does not want to go out, we need to set it out. I still remember as a child, it's a memory, it's embedded in my mind. I was growing up in Muscat. Once a week, we would go out for dinner. Once a week. And that was every Thursday night because Friday was a chutti. छुट्टी था, जुमा में छुट्टी होती थी, एंड सो थर्सडे रात को हम इनवेरिएबली, बिकॉज माय पेरेंट्स आर वेजिटेरियन, वी वुड गो टू अ प्लेस कॉल्ड वुडलैंड्स। इनवेरिएबली दिस वाज लाइक मतलब महामंत्र, एंड एक्चुअली it had become a part of our life. When we shifted the base from Muscat to Dubai, things just changed. And I remember when me and my brother, we were growing up, my parents did a very beautiful thing. Because मैं बोलती थी अरे आउटिंग और कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. So my mom did a very sensible thing. She says, okay, you are grown up. You know what I will do is I am going to give you the money. And तुम घर चलाओ. And I had barely finished my schooling. So I was very excited. Wow, great. She says, remember, if you save money out of it, you will get this much percentage. बस वो कहते हैं खून लगने की देर होती है शेर के मुंह में खून लगने की देर. So my dad said, ये भी लेते ले. I said, नहीं, हमको ये नहीं लेना, हमको वो भी नहीं लेना. मैं तो कहती हूँ हफ्ते में एक बार क्यों, सिर्फ 2 weeks में एक बार ही जाना चाहिए बाहर. Right. जब आपके सर पे आके गिरी तो आपने सारे तरीके से सोचा कि भाई हाउ कैन आई सेव दैट मनी. जब ऑपोजिशन सरकार बना लेती है तो यही होता है. फिर आप सोचो, फिर मेरी लर्निंग भी हो गई और मैंने सीख भी लिया, एंड आई आल्सो लर्नड हाउ टू सेव दैट मनी, एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स, आई अंडरस्टूड दैट आई हैव लर्नड माय like a lesson, whatever they wanted to teach me. And then actually I became quite a householder. I knew exactly hisab and ye aur wo sab aata tha karna.
At that time आता था, अब कुछ नहीं आता. but what I'm trying to tell you is I learned. So I think वही वाली बात आ जाती है घूम फिर के, actions speak louder than words. अगर मेरे पेरेंट्स ने actions कुछ और किए होते और बोला कुछ और होता, I would have never learned it. Absolutely. They always say walk the talk. Absolutely. I'm sure you would have heard walk the talk. Absolutely. Do that. Yes. जो तुम बोल रहे हो उसको करो, अपने शब्दों को खाली मत जाने दो. That is the main मुद्दा, कि भाई आप अपने शब्दों को क्यों खाली जाने देते हो. It's very important to exactly have a connection between what you speak and what you do. Do not disconnect. And in case you do get disconnected, be honest. Accept your folly. At the end of the day, we are human beings and we can make mistakes and we will make mistakes. So at least accept them. And the minute you start to accept them, your children also accept you as a normal being. And then they understand, पापा करते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, but जैसे हम अपने पेरेंट्स को, come on, बच्चे तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि पेरेंट्स ने क्या किया उस टाइम के लिए, बट पेरेंट्स काफी देर तक याद रखते हैं. सो आई थिंक इट हैज टू बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बिकॉज अदरवाइज इट क्रिएट्स सच अ रिफ्ट दैट इवन व्हेन दे ग्रो अप दे रियलाइज कि, ओ माय गॉड, माय फादर यूज्ड टू से लाइक दिस बट ही नेवर डिड इट. वो बोलते ऐसे, करते नहीं थे. मेरी माँ ऐसे बोलती थी मगर किया कभी नहीं. So it is very important. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, you're not doing, you're not really doing exactly what you're saying, then accept it and tell them, मेरा मन था करने को. It's not like I didn't want to do it, but I'm unable to. Sometimes unreasonable demands come your way. By, your children have unreasonable demands. Be honest कि भाई बच्चे ये है, ये रहा आपके आगे है. This is what I get. This is what I can spend and this is what I can do. अब तुम बताओ. Let them answer for you sometimes, and maybe you will be surprised that कई बार जब बच्चे के court में ball होता है, they will actually sit in and think about it, and they're going to think exactly what you might be thinking. Yes. ये हमारे दिमाग में myth है that he is my child, but actually children have their own mind. And when you and sometimes Shefali ma'am, they will provide you with the इतना positivity से भर देंगे ना आपको, when you are in such a किसी negative situation में है, and when you are sharing. So sometimes वो बच्चे के से जो आता है ना, वो ही कहते हैं ना कि बच्चे की voice is God's voice ना, so they can fill you with positivity, they can give you that strength to fight that जो negative situation है. So वही बात है, वापस बॉन्ड बनाओ, कम्युनिकेट करो, अनकंडीशनली लव करो. और इफ आई टेल यू, लर्निंग की थ्योरीज अगर हम पढ़ें तो बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एजुकेशनलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने इतनी सारी लर्निंग की थ्योरीज दी है. बट कंक्लूजन यही है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्सप्लोरिंग, है ना. तो एक्सपीरियंस वो तब करेंगे जब हम उनके कोर्ट में बॉल डालेंगे. ऑब्जर्वेशन तो वो हमारा कर ही रहे हैं, एज गजाली सर सेड कि एवरी टाइम वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एज बीइंग पेरेंट्स. Of course. I think that's a very beautifully thing what you just said, Prachi. Those were very nice closing statements. Ghazali sir, anything that you would like to say to our audience before we? एक दो बातें जहन में आ रही हैं मैम. Please बोलिए. टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक कोट बहुत अच्छा है जो आपने भी सुना होगा, बोलिए. वो पेरेंट्स पर भी अप्लाई होता है. वो क्या है? चिल्ड्रन डोंट केयर हाउ मच यू नो, चिल्ड्रन डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे नो हाउ मच यू केयर. Absolutely. तो ये बहुत जरूरी है कि हम सच्चे मानों में, मैंने कई बार टीचर्स को देखा, थोड़ा सा अगर डाइग्रेस करें 1 मिनट, मैंने कई बार टीचर्स को देखा है नकली प्यार जताते हुए स्टूडेंट्स के लिए, जैसे उनको बेटा या बेटी कह के एड्रेस करना. और वही टीचर उतने ज्यादा लविंग नहीं होते जब लव की सचमुच जरूरत होती है. तो यानी मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं. मेरा कहना ये है, लव इज एज लव डज. तो मोहब्बत कीजिए, ये मत कहिए, कहना नहीं पड़े आपको कि जैसे आज डॉटर्स डे है, बाय द वे मुझे बताया गया आज डॉटर्स डे है,
तो ये पता नहीं अभी फिर वही ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर की बहस शुरू हो जाएगी। फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, ये बताना क्यों हमारा रोज ही दिन बता हाँ राइट। ये बताना क्यों पड़ता है? आज 27 सितंबर को बेटी इधर आओ, आज तुम्हारा दिन है। हमारे देश में तो हर दिन डॉटर्स डे है, हर दिन मदर्स डे है। हम मोहब्बत में यकीन रखने वाले लोग हैं और हमें किसी दिन की जरूरत नहीं है। तो हम तो ईस्टर्न लोग हैं। तो मुझे लगता है सच्ची मोहब्बत सारे काम करा लेती है। अगर मुझसे क्लोजिंग कमेंट के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा, दिल से मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए, बच्चों से भी, इंसानों से भी, स्टूडेंट्स से भी और सबसे। फिर आपको ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मोहब्बत कीजिए ना, आप कम भी बोलेंगे तो चलेगा और मसले अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी एक बड़ी बात कह के रोकता हूं खुद को। बड़ी बात यह है कि नेशनल लेवल पर भी हमें आज की तारीख में मोहब्बत की बहुत जरूरत है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बातें कम करें या मोहब्बत का दावा कम करें। मोहब्बत करें, मोहब्बत को शो ऑफ करना क्या जरूरी है? और जब आप सचमुच मोहब्बत करते हैं ना, सामने वाले को पता चल जाता है कि ये सच्ची मोहब्बत है, ये दिखावा नहीं है, और उसका असर होना शुरू हो जाता है। यही मेरा क्लोजिंग कमेंट है मैम। थोड़ी बड़ी बातें कर नहीं सर, बड़ी बातें कोई नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू सेड। एट द एंड ऑफ द डे किड्स आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम अस, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे सोसाइटी हो। दे आर गोइंग टू लुक एट यू and they are going to learn and imbibe. So please make sure your actions should be such that even when people are not watching you, is you should take the right action. That is most important. जरूरी नहीं है कि दुनिया आपको देखे तभी आप कोई right action लें. I think what is more important, what shows an integrity of a man or a woman, is even when people are not watching you, is when you take the right action. एंड आई थिंक एक्शन से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है. वर्ड्स खोखले नहीं होने चाहिए. एंड ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड अनकंडीशनल लव. उसके बिना तो चलेगा ही नहीं. मेरे हिसाब से तो गजाली सर जिस तरह से कहते हैं, मैं कहूंगी शिद्दत वाली मोहब्बत. और वो दिखती है. नोबडी हैज टू प्रिटेंड इट सर. किसी को कोई प्रिटेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पेंट है जो कुछ टाइम बाद उतर ही जाता है. So anyhow, thank you CatFit for giving us this opportunity and getting these very dynamic kind of topics that we are dealing in these days, which are evolving around new parenting. And I think we are going to get many more programs to you. Thank you. Good evening. And bye for now. Yes, Karan, we can go offline. Just waiting for Karan to switch it off, sir. It was a wonderful session, sir. Thank you for taking out this time, and thank you, Prachi, for making it fantastic. Thank you, Shefali ma'am. मुझे ऐसा लगता है शेफाली मैम कि being mother ना, I also have 2 sons, Ghazali sir. They both are young अभी. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनके साथ में मैं भी per day I'm also learning, I'm becoming a good human being day by day. मुझे ऐसा लगता है. मतलब जब मुझे इन अ सर्टेन वे बिहेव करना है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ, खुद का इंसाइट देखती हूँ. मैं खुद भी बेटर पर्सन हो रही हूँ. बीइंग मदर आई एम बिकमिंग बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन. ये हमेशा होता है ना? Learn a lot of things from our own children. That's important. So we should keep our minds open, not just think that we are parents and we have to teach them. In fact, if you ask me, we are learning from them every day, every minute, every second of our lives. It's only a perception that we teach children. Actually, children teach us much more in lives, much more. I mean, जो उनकी सोच है, आप सोच नहीं सकते. It really goes much beyond our own सोच. So अगर हम उनको trust करेंगे, I'm telling you, we'll be a better parent and a better human being. I'm just waiting for Karan to disconnect. I think he's not disconnecting. I think हम ऐसे करते हैं, we will leave this, so फिर करण को कॉल करते हैं. It says you are in the show. Everyone can see and hear you. It says.